आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने सेपरेटली डिस्कस करना था, उसके बजाय इकट्ठा जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन को देखें, पहला डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन उनकी डेफिनेशन का है। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। के टू पॉइंट्स के बिटवीन जो है, जो भी पाथ है, उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय बॉडी, यानी जो पाथ बॉडी फॉलो कर रहा है उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन बड़ी फेमस सी फिगर है। मैं कहता हूं कि एक बॉडी यहां से यहां आ रहा है, यानी ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर ई पे आया। ठीक है, इस कर्व पाथ के थ्रू आया। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, इस कर्व पाथ के थ्रू, यानी ये जो ए बी सी डी एंड ई, इस कर्व पाथ के थ्रू जो इसकी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी इसकी लेंथ होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। के टू पॉइंट्स के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट देखे ना, ये देखे, शॉर्टेस्ट ये होता है। शॉर्टेस्ट को स्ट्रेट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली, ये देखे यहां तक, ये जो स्ट्रेट लेंथ है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इट्स कीप इट इन माइंड कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमने जाना है तो हमारे पास उसके लिए इनफाइनाइट ऑप्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि मैंने यहां से, ये देखें, बोर्ड तक जाना है। ये देखें, एक तो मैंने इस पॉइंट तक जाना है, ये जो कैन लिखा हुआ है, मैं यहां तक ऐसे जाता हूं स्ट्रेट, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें, ये देखें, ये देखें, मैं यहां से घूम के गया, घूम के ये देखें मैं यहां कैन तक आया, तो ये जो है वो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बेशुमार ऑप्शंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो सकती हैं। जैसे आप ये देखें, एक और एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक फिगर मैं कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल, यहां से आप घूम के ये देखें ए पॉइंट से ई पॉइंट तक आए, तो ये जो होगा ना, वो घूम घूम के हम आए हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होगा, ये क्या होगा? वो कहीं से भी घूम के मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो ये क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अब आप देखें, अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, स्ट्रेट है। जैसे ये देखें, ये स्ट्रेट था, इसलिए याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट है ना। ठीक है, डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट, ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक, जैसे मैंने कहा, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। तो ये जो होगा ना, ये जो कि एक डायरेक्शन में है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने की वजह से, हम चूंकि पढ़ चुके हैं वेक्टर्स, तो ये क्या, कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। लेकिन डिस्टेंस को देखें, वो स्केलर है। ये देखें ना, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कभी हम उधर मूव कर रहे हैं, कभी इस तरफ मूव कर रहे हैं, कभी इस तरफ, ये जैसे यार ये देखें, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए बाय नेचर हम दूसरे डिफरेंस नेचर के लिहाज से कह सकते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है सिंबल। डिस्टेंस को नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम डी और ऊपर वेक्टर सिंबल लगाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताऊं, वैसे एस से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और हम डी से भी कर सकते हैं, लेकिन एरो कभी भी नहीं लगा सकते। इसी तरह इस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस से भी कर सकते हैं, और ऊपर एरो लगाना फिर मस्ट होगा। तो बेसिकली विदाउट एरो अगर है ना, विदाउट एरो, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिस्टेंस है और वो स्केलर है। आप देखिए, इसके बाद साइन, याद रखिएगा, डिस्टेंस चूंकि स्केलर है ना, तो इसका, ये स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए नेगेटिव हो सकती है। कैसे? जैसे एक बात देखिए, फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि इस तरफ एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैं उसको d1 कह देता हूं, वो कितना है? वो 3 मीटर है फॉर एग्जांपल। और एक बॉडी ने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये कितना है जी? ये 2 मीटर है। अगर हम
इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे दोनों को, तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पॉजिटिव है, तो ये उसके लिहाज से क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर अगर हम कहते हैं एक बॉडी ने इधर मूव किया, ठीक है, और एक बॉडी ने इधर मूव किया, आप बताएं कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऐसे करेंगे, हम नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम 3 मीटर फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू यानी 2 मीटर को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 मीटर। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमने ये 2 के साथ क्या लगाई है, नेगेटिव साइन लगाई है, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो ये वाला D2 डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेफ्ट साइड पे है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, वो तो है ही जस्ट जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे हम स्केलर वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो वो जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसलिए उसमें चूंकि डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Now students, our topic of discussion is speed and velocity. We are going to discuss both the terms using their differences. So the first difference between speed and velocity is their definition. So what is the definition of speed? Distance covered per unit time is called speed. What is the definition of velocity? Rate of change of displacement is called velocity. Dear students, per unit time and rate of change, as we have studied that both are having the same meaning. Both are having the meaning that dividing by time. So the difference between speed and velocity is that speed depend upon distance and velocity depend upon displacement. Distance is scalar, so speed is also scalar, but displacement is a vector, that's why velocity is also a vector quantity. So second difference that arises from the definition, that is the nature, that speed is a scalar quantity because it depends upon distance, and velocity is a vector quantity because it depends upon displacement. Now students, third difference is that their symbol. Speed is represented by V and velocity is represented by V with arrowhead. Dear students, as we have studied that vectors quantities are represented by using arrow. So keep it in mind. Speed and velocity are having the same symbol, but the difference is arrow. As velocity is a vector quantity, so we are using arrow here. And speed is a scalar quantity, so we are using its symbol V without arrow. Next difference is that students, sign. A scalar quantity normally cannot be negative. That's why just like a scalar, because speed depends upon scalar, this speed also cannot be negative. Speed cannot be negative. Similarly, velocity can be negative. Why? Because it's a vector quantity. If we are talking that two bodies are moving in opposite direction, so their velocities with respect to each other are considered as negative. For example, students, I'm saying that two bodies, first is moving towards east and its velocity is 20 meter per second. For example, we are going to consider that its velocity is V1, and second body is moving towards west in opposite to east, and its velocity is also 20 meter per second. So here we can use negative sign because both bodies are having the same velocity, but their direction is opposite. That's why we use this negative sign. Both velocities are equal, magnitude of velocities are equal, but their direction are opposite. That's why we are using this negative sign. Similarly, students, velocity, that's why velocity can be negative, but speed cannot be negative. Just like the distance was scalar, that cannot be negative. So speed depends upon the distance, so speed can also not be negative. Then next difference between them is formula. Speed formulated as speed V is equal to distance over time. How can we write this formula? As when we know that rate of change per unit time mean dividing by time.
Per unit time mean dividing by time. So distance covered per unit time is called speed. So we can formulate that speed v is equal to distance dividing by time, because time mean per unit. So we can write as per unit distance, this is a distance, per unit time mean dividing by time is called speed, is equal to speed. And similarly, formula for velocity can also be derived by definition. Rate of change mean again dividing by time. Rate of change of displacement is called velocity. So students, it's mean that rate dividing by time, it's mean rate of change of displacement is called velocity, is equal to velocity. And now student, keep it in mind. In both formulas, we are going to divide it by time. So keep it in mind that it is also speed also, you can say that speed is distance covered by body in 1 unit time. Student, and here also velocity is also displacement covered by body in unit time. And what does it mean? Unit time mean, what does it mean? If we are considering the unit of time second, so here it would be a 1 second. And if we are taking the calculation in minute, so here this is the speed of the body for 1 minute. Similarly, in numerical we will discuss this also. Here velocity, it's mean that how much displacement has been covered by body. If we are taking the time in, for example, hours, so it would show that the displacement covered by body in 1 hour, how much displacement has been covered by body in 1 hour. And if we are taking the time in for example days, so that would be in 1 day. And if we are taking the time in for example 1 year, so the unit time mean 1 year. How can we say that, student? I'm going to explain this by using an example. For example, students, I'm saying that body covers, for example, body covers 100-meter distance in 5 seconds. Now I am interested to find the speed of the body. So I will divide, because the formula, what is the formula for speed? Distance over time. So I will divide 100 by 5. The answer here, what is the unit of 100? That was distance, that is equal to 100 meter. So here time is equal to 5 seconds. So it would become students, 5 20s are 100. It would become 20 meter per second. What does it mean? Per mean 1. So actually, what is the speed? Speed is actually distance, 20 meter distance covered by body in 1 second. If I am taking this time in minute or hour, that would also, the speed also will show that this is the distance covered by body in unit time. That unit time can either be second, minute, or day, month, year. It can be, but time would be 1. Normally we are actually, student, here we consider the time in seconds. Is that clear, students? So keep it in mind, students. Actually, speed is actually distance covered by body in 1 second. If we are taking the time as a second, okay. Then velocity is also displacement covered by body in unit time. That is, for example, 1 second. Is that clear? Then, so next difference, uniform difference. Uniform mean, if we are going to write the uniform speed, so we will define that distance covered by body in equal interval of time are equal, then, or normally we can say that if body is covering equal distances in equal interval of time, then speed is uniform. And if body is covering equal displacements in equal interval of time, then velocity is uniform. Is that clear, students?